what the lack of of a responsible opposition that helped shape this season for us. And ultimately, it is the people who will judge and judge rightly. History will judge the BJP for the kind of negative role that they have played persistently, insistently, and consistently. They have created an atmosphere of irresponsibility. They have a total lack of accountability, and they have an obstructive vision. Somewhere their thirst for power has been larger, as have their egos been larger than the commitment to the nation or to the common man. You are all witness to the fact that in the last session, the just concluded budget session, where they vehemently opposed the functioning of Parliament, thereby preventing important bills such as the Food Security Bill and the Land Acquisition Bill, which would have benefited crores of Indians and farmers to have got a better remunerative price for their land. I can understand the insecurity and the fear of the BJP, because irrespective of what they say overtly and what they come and perform in front of television cameras and not within the precincts of Parliament, these people are only expressing their angst, the terror that they will be performing a hat trick of sitting in the opposition for the third time after 2014. The BJP has exposed its flank, where they have shown that they are absolutely politically bankrupt, have a tunnel vision whereby their whole aim is to occupy power but not to serve the people. And they have divisive rank and file. There is no collective goal visible. There is no cohesiveness within their ranks, and they have individuals who are greedy and lusting for power. जो हवस जो दिख रही है सबकी अधिकार के लिए, जो हवस के प्यासे होते हैं, तो ये आप देख लीजिए कि इन लोगों का कौन सी ये कमिटमेंट है देशवासियों से. अगर इन लोगों में अगर एक तिनका भी कमिटमेंट होती तो आज के दिन दे वुड हैव पास द फूड सिक्योरिटी बिल, जो हजारों करोड़ों गर्भवती माएँ को, स्त्रियों को खाना मिल सकती थी, बच्चों को कुपोषण से रिहा कर सकते थे, किसानों की अधिकार को इन्होंने ठुकरा दिए और फिर कहते हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे. ये उनकी नेशनल एजेंडा है. अफसोस इस बात की है. हाँ, हम कांग्रेस में हम चाहते हैं कि अगर दुश्मन भी हो तो लायक हो, हमसे लड़ने लायक हो, हमसे अच्छे बने, आगे बढ़े, ताकि हम अपने स्टैंडर्ड को ऊंचा रख सकते हैं. मगर अफसोस इस बात की है कि इनकी विजन में खोट है. सरकार उचित मोतियाबिंद कैंप चलाती है, जाके अपना विजन ठीक कर ले फ्री में. शायद इनको पता नहीं कि क्या क्या कार्यक्रम चलते रहते हैं, और एक दूसरे के बीच में बंटवारे करने के लिए, अधिकार के लिए ये षड्यंत्र चलाते रहते हैं. In the view of such a pathetic opposition, who have not contributed to policy even in 0.1%,
आपने कभी सुना? कभी कुछ कहे हैं ये लोग? किसी ने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि देश के तरक्की के लिए हम ये करें? नहीं, कहते हैं कि पहले मुझे गद्दी पे बिठाओ फिर हम बताएंगे। क्या कभी इन्होंने एक जिम्मेवार लोगों के जैसे हाउस में खड़े होकर कहा कि अगर इस बिल में हम ऐसा करेंगे ये ठीक होगा? नहीं। और इर्द गिर्द जहां भी प्लेटफॉर्म मिल गए वहां जाके ये बोलना शुरू कर देते हैं। पार्लियामेंट में नहीं, सिर्फ टेलीविज़न कैमरा के सामने। बेहतर होगा कि भाजपा अपना टीवी सीरियल लिखते रहे। इट्स अ वेरी गुड occupational therapy as well as an option for them, because 2014 में ये फिर से हैट्रिक करके विपक्ष में ही बैठे रहेंगे। हम बहुत गर्व से कह सकते हैं, हाँ मुश्किल समय से बीते हैं, मगर हम गर्व से कह सकते हैं कि आज के दिन देश भर में जो दुनिया में ने कभी नहीं देखा, महात्मा गांधी नरेगा के द्वारा वी हैव एम्पावर्ड लैक्स ऑफ पीपल। सारा दुनिया इस तरफ पलट के देख रही है कि हाउ डज अ नेशन विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ आवर्स, मल्टी रिलीजन, मल्टी लिंगुअल, मल्टी कल्चरल, हाउ डू वी ब्रिंग एंड encapsulate legislations which benefit more than 1 billion population through Mahatma Gandhi Manrega. The wages per day have doubled from 65 to 128 since we launched this scheme. We have kept ourselves abreast to ensure that citizens can maximize on the opportunities given by the government. Farmers and agricultural labor have been able to raise their bargaining power. There has been a 3-fold increase in food subsidy. Isme I would like to illustrate. We had tons of grain. Yes, some of it was left outdoor because we didn't have the capacity to store that much grain. It's a salute to the farmers that even if the hectares didn't increase because of good practices in farming, they were able to give us food securities. This is our salute to the farmers. And the BJP never came forward with one suggestion, not one positive word for the farmers to say that they have raised this much food, that today people have the right to eat in this country because of our farmers. They have only criticized. We have the food security bill, which will entitle families in the Antyodaya Anna Yojana, where you will get 35 kgs of food grains per month, and other families for 5 kgs per month at subsidized rates under the PDS system. There is so much that has been done. Is anyone aware of how many roads have been built, how much rural connectivity has been done, how my farmers are able to reach agricultural markets with ease? Nahi. People won't be knowing this because the BJP did not allow Parliament to function not just in one session but continuously in every session. They have obstructed, removed the right of the citizen, the right to information of what is happening in Parliament. They have spread canards and half-truths, and they have hidden under the guise, but they could not cover their greed. They stand completely exposed that they have absolutely no commitment to the country, to the progress and development of our people, more particularly for the poorest of the poor, for those who need all the help and guidance that the government of India is providing, the UPA too is providing. Did they once stand up and say that yes, it is because of the government policies today that we have world-class industry opening in India? Did they ever acknowledge that today we have empowered our business plans so much that Indians are able to have the confidence to go and invest in other countries and bring home foreign exchange and currency, besides creating employment in those nations?
Did this opposition ever take accountability or responsibility when they fan the flames of hatred between citizen and citizen, and they have no commitment to India as such? Do these people acknowledge that our foreign policies, with our tolerance and patience, which are guided by the principles of Mahatma Gandhi's militant non-violence, we are not passive. We will argue, we will contest, we will challenge, but we will do it in a non-violence way, which has always been the diktat of our dharmas when we deal with our citizens and the nations across the borders. Agricultural credit, which I know as a farmer, you know what it has meant to thousands and lakhs and crores of farmers. It is the farmers who feed us today. They feed the common man right up to the Rashtrapati. These are the farmers that feed us. And do they realize, has the opposition ever acknowledged, come forward or appreciated that we have raised agricultural credit in the agricultural sector more than 5-fold, so that we can encourage our small and tiny farmers in their food productivity? As you all know, food records were at the highest, besides which the key critical area of intervention which the government did, taking cognizance of the fact that health, good, bad, indifferent health, impacts every citizen in the country today, ensuring that family savings and that they don't have to go and borrow from the markets. Investments in public health have shown reduction in infant and maternal mortalities. Women are living safer and longer. There are cashless transfers when they reach the hospitals. Life expectancy levels have been raising steadily. And the biggest pride for us, the one point on which we stand tall, is that we don't see the face of polio in the last 2 years. We have eradicated it from India, and God willing that we will never see the face of polio. No child of India will ever be afflicted by polio. That continues to remain our endeavor, and as they say, inshallah, inshallah. Then in the 12th plan, एक मिनट आप ज़रा सब्र कीजिए, मैं आपके सवाल के जवाब दूंगी. We have increased 3 lakh crore from the 11th plan expenditure of 90,000 crore. We have shown a 335% increase in allocations into health sector and investment. So we can look forward to a young, strong and healthy India in the future, and we will be the first amongst equals, and our children will be the ones who will be catering to all the needs of a global community, as we already are, but in larger, far larger percentages. Our education programs and plans that we have put in, how many crores of children go to school today? The right to education, which I thought was a brilliant intervention. Can anyone deny that empowering our children to be educated, that our children will go to school, that it will not matter what caste or creed or community they belong to, that there will be a little India that is growing to merge with us in our adult India, where children will go to school and not in labor. They will not go to work somewhere else, that they have the right to go somewhere else, that poor parents have acknowledged that the government will take on that role for them and remove that conflict that parents go to, that I can't educate my child, so should I send them for child labor? They don't today. Children go to school. It's one of the most heartening visions of India, where you see our school children in the remote villages dressed up in oversized uniforms, going to school today, carrying books instead of their tender hands doing manual labor. I think it's a tremendous achievement, perhaps one of the
single most advantageous thing that will bring about social equity and a more inclusive society than we have witnessed today. All of us know, those of us in the farming sector, minimum support price for rice and paddy have more than doubled from 2004 to 12 and 13. Today, the Indian farmer who grows paddy and rice gets a far better minimum support price, thereby getting sustainable agricultural patterns and preventing them from going into the clutches of money lenders. My minimum support price of cereals, which has increased more than threefold, is now even better than rice and paddy. And in our efforts to support the marginal farmer who produces cereals, IT and telecom, each one of you will acknowledge that today across India, you have every citizen virtually having a cell phone in their hand. This kind of Haji, it is Haji that citizens are able to communicate. What the outcome of your questions will be, we will all be witness. But the fact of the matter is, telecommunication is perhaps one of the largest connectivities in the world today, given our population size and our percentages. And because of this, UPA2's pro-poor policies, consumption in rural areas registered an increase of 3.4%, which was only 0.8% initially. So we have jumped to 3.4% during up to 2004. You see the rapid increase that has come by. Credit and loans in priority sector, micro, small and medium enterprises have more than doubled in the last 5 years. Having said all of this, ladies and gentlemen, we have the city welfare and infrastructure, all-weather roads that have given great connectivity to citizens who can travel. Tourism, I can't resist talking about tourism, as all of you know. Today we have an important global tourist destination, which we had promoted, calling it Incredible India. India remains incredible. India remains invincible. And India remains as first amongst equals. India leads by example. We will remain India. Other countries will try to copy it and measure up to us. We don't become some other country. We don't follow something else. We follow what is important to the people of our nation. This will be ruled by the principles of democracy, by the people, for the people, of the people. Jai Hind. मुलायम सिंह आपके यूपी डिनर पर आने को तैयार नहीं है, क्या आ रहे हैं वो नहीं आ रहे हैं, वही गवाह रहेंगे कि आपको परफॉर्मेंस चंद घंटों के इंतजार है, देखा जाएगा. थोड़ा तो सस्पेंस होनी भी चाहिए. मैं आपको इनविटेशन डिस्पैच लग रही हूँ. मैं ये हमेशा हमारे एलाइज, हमारे इसमें देश की तरक्की में हमेशा ही चीफ गेस्ट ही रहेंगे. वी अप्रिशिएट देम एंड वी नहीं. क्या हुआ कुछ कहा गया है, क्या हुआ, कुछ कहा गया था तो ठीक है, वो तो देश की तरीका है, ये कानून की तरीका है. तो उसके बाद जो होगा वो सबके लिए हम सब गवाह है, देखा जाएगा. आपने अपने स्पीच में उपलब्धियां अचीवमेंट से उनको गिनाया, लेकिन आपने कहीं भी करप्शन की बात नहीं की. 2 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा, 1 मंत्री जेल चला गया. इस करप्शन को आप किस तरह से लेते हैं? आप भूल गए हैं कि सबसे ज्यादा कदम करप्शन के खिलाफ हमने उठाया और हमने कभी बर्दाश्त नहीं किया और सब्र नहीं किया. कहीं भी करप्शन की निशान नाम कहीं भी आने से हम इशारा कर दिए और जो कदम उठाना था हमने उठा. उसके अलावा सबसे बड़े कानून व्यवस्था और जो लेजिस्लेशंस हमने पार्लियामेंट में लेके आए, आप देख रहे हैं.
कि उसके वजह से आज के दिन आप सब लोग ऐसा बैठ के करप्शन के बारे में बोल सक रहे हैं और जिक्र कर सक रहे हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन की जो हथौड़ा हमने आम आदमी के हाथ में दिए हैं, तो इट इज अ फैंटास्टिक एंड जजेस अकाउंटेबिलिटी बिल जो पार्लियामेंट में आया है, ऐसे कई कानून व्यवस्था हमने ले आए हैं, आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग कुछ कह देते हैं, मगर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या एंटी करप्शन के बुनियाद बने हैं या नहीं। ये बने हुए हैं और जो भी इन्वेस्टिगेशंस जारी है, हम इससे हटेंगे नहीं, मुकरेंगे नहीं, और जब तक हमारी ये एजेंडा पूरी नहीं होगी हम इस पे रहेंगे। 2 रिपोर्ट कार्ड क्यों आ रहे हैं? पहली चीज, एक, आपको भरोसा नहीं है कि यूपीए 2 ने 4 साल में इतना बड़ा अचीवमेंट किया है कि आप यूपीए 3 पे जाने के लिए अग्रसर हैं। आपको 9 साल का रिपोर्ट कार्ड लाना पड़ रहा है। दूसरा ये कि एक रेल मंत्रालय और दूसरा ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय के बारे में बार बार आप कहती हैं, लेकिन आप इस 4 साल की बात नहीं कर रही है, उस 5 साल की बात कर रही है जिसमें आपके सहयोगी मंत्री थे। इस 5 साल में आपके 4 मंत्री बदलने पड़े और अभी तक वो डेवलपमेंट नहीं दिखा जो पिछले 5 साल में था। क्या वजह कुछ नहीं, आप कह रहे हैं कि हमें कोई भरोसा नहीं है, हमें पूरा भरोसा है। 4 साल पूरे होने पे आप भी जानते हैं कि लास्ट साल में हम सब काम में व्यस्त रहेंगे, हम काम करेंगे, क्योंकि इलेक्शन 1 साल बाद आएगी। इस बीच में कहीं सूखा पड़ा हुआ है, कहीं कुछ हो रहा है, तो देश के सेवा में हम व्यस्त रहेंगे। हमने सोचा कि बेहतर कि हम आज के दिन आपके सामने हम हमारे रिपोर्ट कार्ड रखें, ताकि आप सब लोग हमें कह सकते हैं, आपकी चर्चा, आपकी सोच विचार हमसे मिलेगी, और फिर हम आगे कैसे जाएं ये हम सोच के चल रहे हैं। हम पूरे भरोसे में आगे चल रहे हैं कि 2014 में देश और इतिहास गवाह रहेगी कि हम आखिर जो भी आप कहिए, वास्तव में देश के इतिहास गवाह है कि हमने क्या किया, क्या क्या नहीं किया देश के लिए, सब जानते हैं। आज के दिन अगर न्याय संदस, अरे 2 क्या 4 देंगे हम, ताकि आपको समझ में आए। इसमें कहाँ कोई सुपरस्टिशन है कि 1 नंबर ही देना है? नहीं भाई। can say proudly that Nehru visions for the India, Indira Gandhi, the former Prime Minister Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, you can say proudly. Now for the last 9 years, Mr. Manmohan Singh, what you can say proudly, 2G, Colgate, Railgate, what else? Yes, Gates, yes. Only you can say only Gates. No. We don't talk about Bill Gates. No, we're not talking about Bill Gates. So then please, let us not minimize what is the good that is being done. As media, you also have an accountability to inform the nation about what else is being done. You are talking about 2G, you are not talking about the connectivities. You are not talking about how every citizen has a cell phone at a very cheap and affordable rate. An accusation has been made, there is an ongoing investigation. Till we reach the conclusion, it would be politically correct for us to hold our opinions. अपनी 34 सालगिरह मना रही है। तीसरी सालगिरह में आपके अलाइज टीएमसी और डीएमके थे, लेकिन इस बार नहीं है, वो बाहर चले गए। चिंता का विषय नहीं मानती? ऑफ कोर्स हम चिंता का विषय मानते हैं। हम हमेशा ही अपने जितने भी एलाइज साथ रहे, हम उनका बहुत मर्यादा और गरिमा रखते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ आगे चले, मगर हमें पूरा ये है कि उनकी अपनी मजबूरियां होते हैं, उनके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं और उनके अपने इशारे भी होते हैं। मैम, एक खबर और है कि तीसरे सालगिरह में मुलायम सिंह यादव अपना रिपोर्ट कार्ड लेके मंच पर थे, लेकिन सोर्सेस के हवाले से खबर है समाजवादी पार्टी की, इस बार वो मंच पर नहीं रहेंगे, वो डिनर पार्टी में जरूर शरीक होंगे। तो चलो देखा जाएगा, चंद घंटों की बात है। अब ये हमें हाँ, रेणुका जी, आपने कहा कि बीजेपी सत्ता के लिए एकदम से ग्रीडी हो गई, और आपको नहीं लगता? नहीं, नहीं, मेरे कहने की बात नहीं, सारे देश में लोग कह रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैडम कि
डीएमके से राजीव गांधी की हत्या को लेकर आपके कैसे रिश्ते रहे किसी को बताना नहीं, आप उनके साथ सरकार चला रहे थे। आप उस नहीं, आप क्या कहना, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इस इल्ज़ाम का मैं जवाब नहीं देना चाह रही हूँ। सरकार चला रहे हैं जिन्होंने कहा कि सोनिया गांधी विदेशी मुल्क है, तो आपको सत्ता का लालच नहीं है, फिर किस वजह से आप लोग एक साथ, क्या वजह है, एक बात बताओ। देखिए, क्योंकि हम व्यक्तिगत आरोप से हम देश के निगाह को गलत नहीं लगाते, समझे ना। हमारे ऊपर आप व्यक्तिगत आरोप लगाते जाइए, इंडिविजुअल्स हमारे पार्टी में, मगर हमारा जिगर है और दिल भी है। हम देश के बारे में सोचते हैं, किसी ने हमारे बारे में कुछ बुरा कहा वो भुगतेंगे। हम सोचते हैं कि देश की तरक्की के लिए साथ मिलकर आगे कदम बढ़ाएं। Last question. Apart from corruption, the bigger question before the UPA today is the crisis of leadership at the top. No, excuse me. There is Prime Minister is being defeated. no. I'm sorry. This is not a question that I want to dignify with an answer. Since there is absolutely no dichotomy in thought or action, there is no doubt, there is no dilution, diversion. We have Mr. Prime Minister Manmohan Singh ji sitting at the helm of affairs. There is no division, there is no nothing. These are illusionary attempts of the BJP, which is rather pathetic, to try and show something that doesn't exist. Thank you very much.